and welcome to Sayukta Singh Studio, guys, and I am here with the most important one of your topics, and that is what are the types of questions that do come in your creative part of your any design entrance, NIFT हो, NID हो या कोई भी design entrance exam हो. Most important 6 to 7 topics which do come in your entrance exam. So I am here with that. Let's get started to this very session. So guys, the first important topic that comes in your exam is related to design inspiration and object drawing. Like this year also there was a question that was based on design inspiration, and that is draw the musical instrument on the basis of 4 types of festival of India, जिसको बहुत सारे बच्चों ने गलत समझा and वो 4 musical instruments बना करके आ गए. So here if you can part these questions, this very question, we will get 2 topics like 4 types of festival, उससे related आपको object drawing करना था. So the question was based on design inspiration and you have had to do ultimately the object drawing on the basis of that design inspiration. So ये topic बहुत important है and इससे related बहुत सारे questions past के design entrance exams में आ चुके हैं. Like किसी traditional motive से पे related आपको कोई भी stole बनाना है या फिर कोई दुपट्टा बनाना है या फिर आपको कोई insect दिया हुआ रहेगा एंड उसके बेसिस पे आपको कोई प्रोडक्ट डिजाइन करना है. सो इन शॉर्ट ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट डिजाइनिंग डू कम इन ऑब्जेक्ट ड्राइंग पार्ट एंड इंस्पायर्ड फ्रॉम एनीथिंग जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा दैट कम्स विद इन डिजाइन इंस्पिरेशन. सो दैट्स व्हाई द फर्स्ट थिंग व्हिच यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस इज योर ऑब्जेक्ट ड्राइंग, जिसमें आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस कर सकते हो ऑन वेरियस सेगमेंट्स, on musical instruments, on vehicles, on sports के items, on like garments and everything. बहुत सारे products, home decor के, home furnishing के, home appliances के, and on the basis of inspiration, inspired from umbrella, butterfly, any emotion, any like weather condition. तो इन चीज़ों पे आप इन चीज़ों से इंस्पायर्ड होकर के आप उन प्रोडक्ट्स को बना सकते हो. सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक विच यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस. Now the second most important topic which do come in your design entrance exam, and that is compositions and perspective. Like many of our students have doubt कि compositions तो perspective ही होते हैं ना. No guys, in composition you get elements of design, you get principles of design, but in perspective there are technical things like आप horizon पे काम करते हो, vanishing point पे काम करते हो, and compositions and perspective thus are very different things. But yes, you have got a choice because it's never asked in your question कि 1 point से बनाओ या 2 point से बनाओ. It's up to you how you want to portray that very view. So to watch compositions you can go through the playlist and you can watch that session. I have a session on perspective also, but that is for beginners. You can go and watch that session and it will be a great help to you. So that's why compositions and perspective are really very important topics if you are preparing for your CAT. Like ऐसे questions आ सकते हैं कि visit to a railway station, visit to a bus stand, या फिर एक cobblers का scene, या फिर एक tailor का work space, या फिर एक chef का work place. तो masters of designing के लिए या फिर bachelors of designing के लिए आप appear हो रहे हो, then compositions and perspective are really important topics to practice. Now the third most important topic guys is gestures and expressions. Like yes guys, there can be a question related to you have to portray a smiley or you have to redesign a smiley on any topic given. It can be a topic related to your bedtime, your sleeping, or you're very active, or you are frustrated. सो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो डू प्रैक्टिस इट गाइज, एंड जेस्चर्स एंड एक्सप्रेशंस आर ऑल्सो अ पार्ट, अ बेसिक फॉर योर कॉमिक स्ट्रिप्स एंड स्टोरी बोर्ड्स और प्रोसेस ड्राइंग. सो आई एम कमिंग ऑन द फोर्थ टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज comic strips
gestures expressions जो कि मैंने अभी बता दिया, story boards and process drawing. So guys, if you have not gone through my playlist, go through the playlist and you will find all these 3 topics present there. So if you are watching me for the first time, you can go and scroll down the playlist. आपको ये सारे topics जो कि बहुत important है for your CAT का portion, if you are appearing for any design entrance exam, are present. Now the 5th most important topics or the questions that come from are posters and stamps. Now what are posters and what are stamps? ये मैंने डेमो के साथ सॉल्व करके बताया हुआ है ऑन माई चैनल. गो थ्रू द प्लेलिस्ट और ऑन द आई बटन पे भी मैंने लगाया होगा या फिर आपको लिंक भी मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन. गो एंड वॉच दैट सेशन बिकॉज दैट ऑल्सो कम्स इन योर NID, NIFT, both for masters and for bachelors of designing. Now the 6th most important topic which you get in your CAT ka portion, and that is futuristic design, guys. Like I have a session on futuristic also, and there I have solved previous year question on futuristic. तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और उस पूरे सेशन को देखो. फ्यूचरिस्टिक डिजाइन्स आर रियली इंपॉर्टेंट. लाइक इसमें क्वेश्चंस आपके ऐसे आ सकते हैं कि राइट नाउ यू आर इन 2021 और 2022, सो 2070 में अगर कोई टिफिन बॉक्स होगा या वाटर बॉटल होगा या फिर आपके बच्चे के लिए उसका बैग होगा, सो हाउ इट विल बी इन 2070. How will be the futuristic bus stands? How will be the futuristic classrooms? तो ऐसे questions आपके futuristic में आते हैं. So again, this is the most important topic if you are practicing for your CAT का portion and if you are preparing for your design entrance exam. So go through these topics which I have mentioned, and guys, if you have not subscribed my channel, go and subscribe it. Hit the bell icon for notifications because इतने इंपॉर्टेंट सेशंस तो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे. सो दिस इज योर संयुक्ता सिंह साइनिंग ऑफ. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.